All right, so providing information, just simply providing information, will it work or not? So what information are we looking at specifically within our research? We're looking at the angina plan by Lewin. Angina plan is a complete package, is a very informational package जहाँ पे इस document जिसके अंदर 70 पेजेस होते हैं and in the document ये चीज़ें लिखी होती हैं. What is angina? Misconception about angina and what to do when you have these symptoms. So there's a very informational material. उस informational document के साथ people also get a cassette tape that they're supposed to play, and cassette tape के अंदर there are certain instructions about what to do during hyperventilation panic attack, and also the audio tape is also the क्या कहते हैं audio book version of whatever यहाँ पे written है. So they have a reading material plus the audio book version, ठीक है ना. And basically there's the nurses are supposed to follow them up on week 1, 4, 8, 12. So there's a 12-week study, and the nurses are time to time supposed to follow them up after every, I guess, 3 weeks gap. Jopia. So yeah, so you want to find out whether this angina plan works or not. So this is not a fear arousal because you're clarifying the misconception. So when you clarify misconceptions, you kind of make people relaxed. When you tell them what to do in these situations, you make them relaxed. So you're not scaring them, number one. So that's why it's not fear arousal. Number two, this is not gonna follow the communication model. ये communication model के अंदर basically it talks from the perspective of आपको अपने कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी चीज़ों के बारे में ख्याल रखना है. यहाँ पे वो अप्लाई तो हो सकता है, एंजाइना प्लान का बिल्कुल कम्युनिकेशन मॉडल अप्लाई हो सकता है, बट इसके अंदर उस पर्सपेक्टिव से देखने के व्हाट इफ यू जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट, व्हाट इफ वो खुद से अपने आप को ठीक कर लें. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इफ द पेशेंट कैन गेट बेटर बाय देमसेल्व्स इफ दे जस्ट नो व्हाट टू डू. सो दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग अबाउट. So you gave them the document. They can ask who you are you gonna experimenting on people who have angina, obviously. So you have 142 patients from UK divided into two groups. ठीक है ना, जिनको angina है. Some of them will get the angina plan. That's the experimental group, and the other group who will not get angina plan will be a placebo control group. In the placebo control group, they would get something that is an educational session by the nurse, but that's not the angina plan. The Indiana plan is only given to the experimental group, and you want to know which one works best. So to find out which one works best, you need to first of all you need to know कि पहले लोगों के क्या हालात हैं. So to find this out, पहले लोगों के क्या हालात हैं, you do a baseline check on the hospital anxiety and depression scale. ये बकायदा स्केल का नाम मेंशन है तुम्हारे बुक्स के अंदर. इसके अंदर लोगों के एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन वगैरह पता चल जाता है. So when you do this scale, 6 months गुजर जाते हैं. 6 महीने बाद you do this baseline again to find out कि लोग बेहतर हुए नहीं हुए. So at the end of 6 months, the angina plan वाले लोग uh, they had a lower score on this questionnaire as compared to the other groups. So number one, their depression and anxiety is reduced when they go through the angina plan. Number two, what about their health? क्योंकि that is the mental health. What about the physical health? Physical health aspect के हवाले से the people who went through the angina plan were readmitted lesser amount of times than people who did not have the angina plan. So we can argue that angina plan while local health was better. That's why they were readmitted to the hospital fewer times. Also, because their health was better than people from of the placebo control group, उनको अपने डॉक्टर से कम अपॉइंटमेंट्स लेने पड़े क्योंकि यू जनरली टेक एन अपॉइंटमेंट जब तुम्हें मसला होता है. सो अंजाना group also had the lesser appointment with the doctors in that year. So we can say that their mental and physical health both improved. This study has a huge problem with ethics क्योंकि yeah, you help people's lives, but what about the people who यहाँ पे, क्योंकि आपने इनके फिर एक तरीके से 6 महीने इनके जाए के बिकॉज उनकी यह गलती कि इनको अनजाना प्लान नहीं मिला, उनको तो कुछ और मिल गया. So this is a very huge ethical problem in this study. Bharat, ठीक है. uh, this is the debate question for the angina plan वाली study. So angina plan will support this, ठीक है ना. इसके counter argument में क्या आएगा, the fair arousal studies आएंगी and providing information आएगा. So it's gonna be an argument between all three studies of your strategy to promote health वाला scene. ठीक है. All right. Yeah. So evaluating angina plan की research, ठीक है ना, is it individual situational? Well, it is situational in the regard के people were put in different situations and that's why the people's result differed. It has nothing to do with individual personalities यहाँ पे.
Is it applicable? Yes, at least for angina people, it's applicable because we now know that people with angina can take care of themselves if they know what to do. So providing information will work. Was it appropriate? Well, the angina plan itself is appropriate. It makes people independent from doctors. So also cost effective because once you know what to do, you will not have to go to doctors again. So it saves the patient's money. Is it generalizable? Well, maybe in people for angina, but we don't know about other medical conditions. So क्या पता किसी और medical condition के लिए providing information does not work. You need to do something else. You can argue that providing information does not work in smoking cases because smoking के information people exactly know what the information is on always available on Google, but people don't change their behavior, right? So I would say that smoking and their providing information will not work. ठीक है, just a personal guess. uh, Also this study of culture bias because you know what, this was done on the UK people. So whatever the message was on the document and the audio tape was, I guess, shaped according to UK culture. हमारे culture के अंदर you need to redesign the document and redesign the audio tape अपने तरीके से. uh, is there any research that supports providing evidence? Yes. Serafino ने research की थी 2006 के अंदर. You have seen her name a lot in the health psychology. So Serafino ने क्या किया कि she investigated certain people. There was a TV show called क्या कहते हैं, Cable Quit. एक रियलिटी टीवी शो था केबल क्विट जिसके अंदर लोग जो थे अपने हेल्थ प्रॉब्लम के साथ आते थे. फॉर एग्जाम्पल किसी का पॉस्चर बुराता होता है, किसी को एडिक्शन होती है, किसी को वेट लॉस प्रॉब्लम्स होते हैं. Many people who come with problems and they want to rid, yeah, change their habits. So they go to a doctor or a psychotherapist, whatever. They tell them what to do, and जो केबल क्विट होता है ना, जो पूरी टीम होती है कैमरा से पूरा दिन उनका रिकॉर्ड करती है of how they're changing, what routines are they going through, क्या difficulties आ रही हैं. So the audience who watches cable quit also get aware of what they're supposed to do with their own problems अगर problems same to same है. So people who saw cable quit actually learned from the program and उन्होंने भी अपने मसले हल किए. So 17% of the viewers changed their own problems while watching cable quit within 1 year. So cable quit is kind of acting like providing information wise. So people got information on what to do through cable quit and they changed their behavior. So yes, you can say providing information does work to some extent according to Serafina's research. So you have another research to support yourself in this debate of ये वाला, ठीक है ना. Serafina का research यहाँ पे लिख सकती हो. You can also argue that Cope research is also somewhat providing information. It's a mixture of both. Fear arousal is there, जहाँ पे आग लग रही थी, but providing information is the क्या कहते हैं what to do वाला scene. Janice के अंदर I would say कि providing information was there in one of the groups, but was not there in the other group. ठीक है ना. So that's why four के अंदर आया हुआ है if you look at the control group, but it could be easily come in the against अगर if you look at the high fear arousal group. Yeah. And this is also nature and nurture kind of nurture because we are making people learn what to do when they have angina. So nurture के अंदर आ गई है. All right. So the reason why this section, जो पूरे के पूरे जो तीनों section है, right? Sorry, the first section है strategy of health promotion. के अंदर we don't discuss deterministic versus free will, क्योंकि you already have enough points. क्योंकि this is a very experiment heavy portion, right? इसके अंदर कम से कम angina plan एक experiment है, दूसरा जो था वो ये वाला. Yes, providing information. Yeah, sorry, percentage combination is theoretical, but this is 2:1 रेशियो. तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स ज़्यादा हैं, थियोरेटिकल पॉइंट्स कम है. सही. तो दैट्स वाई इसके अंदर हम ज़्यादा जनरलाइजेबिलिटी वगैरह के हवाले से बात करें, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस फ्री विल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार अप्लाई भी नहीं हो सकता. नंबर टू, यू हैव more chances to work with individual situational nature nurture and the generalizability culture bias वगैरह points. So that's the idea. जब तुम्हारे पास experiment heavy section आएगा, it's better to go with the GRAVED, generalizability, reliability, application validity, and ethics and data. Bharat. So that's at the end of the first section, right? Up, you're gonna enter the second section. Second section, and what they're gonna talk about is they're gonna take three scenarios, right? School, workplace, and community, and they're gonna tell you.
वन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ईच ऑफ दीज टू टेल यू कि स्कूल के अंदर किस तरह हेल्थ प्रमोट किया जाता है, वर्क प्लेस के अंदर किस तरह हेल्थ प्रमोट किया जाता है, एंड कम्युनिटीज के अंदर किस तरह हेल्थ प्रमोट किया जाता है. सो फॉर स्कूल वी हैव द रिसर्च बाय टैपर. इट्स अ वेरी फन रिसर्च, ठीक है ना. टैपर wants to find out कि क्या स्कूल के अंदर हम हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं. So the issue that you're dealing with in school is that people or the kids who are going to eat lunch, they don't eat fruits and vegetables. So you want to promote healthy eating habits in kids in school. So Tapper is going to conduct experiment. वहाँ जो ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, वो मैं बताता हूँ अभी कौन सा. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट के what's Tapper going to do, what Tapper is aiming for. तो बेसिकली उसके थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा. So Tapper suggests three ways to make people make kids eat fruit and vegetables. He says या तो तुम बच्चों को नई चीजें के जायका चखा दो, क्योंकि अगर उनको जायका पसंद आ गया तो क्या पता खा लेंगे. That's taste exposure. कई दफा उनके मुंह में डाल दो, अगर पसंद आ गया खाना शुरू हो जाएंगे. That's one way. It's like experimenting with taste. दूसरा मॉडलिंग के अंदर क्या होगा, a kid will watch someone that the kid likes or admires eat the vegetables or the fruit, and the kid may imitate the model, so he will eat the vegetable and the fruit himself. ठीक है ना, just like we eat fruit and vegetables. अगर हमारा favorite superhero on the a favorite superhero is eating something, we want to eat that same thing. uh, the last is reward के बच्चे को straight up reward दे दो. If he eats a fruit and vegetable, you reward him, right? So Tapper suggests three ways that you can get kids to eat fruit and vegetables. So he designs certain experiments which are going to use these techniques. ठीक है. So दिस इज अ पायलट स्टडी. तो वहाँ अभी ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ. सो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करता है घरों में, क्लासरूम्स में. पहले घर के अंदर करता है. घर के अंदर ही इन्वेस्टिगेट्स के कौन से टेक्निक ज़्यादातर हेल्पफुल होगा. सो ही यूजेस 4 टेक्निक्स. नंबर 1 is just show the food to the kid and what क्या पता खा लेगा. Number 2 is you make the kids taste different food and you reward them for tasting different food. 3 is the peer modeling. Peer modeling के अंदर you make the kid watch someone he admires eat the fruit and vegetables, and the kid will maybe copy him. And number 4 is the kid, if he copies whoever is eating the fruit and vegetable, the kid will be rewarded if he imitates the behavior. So there are 4 different conditions, right? Basically, whatever he did, वहाँ पे he was successful because at the end of the day, the kids were eating fruits and vegetables. ठीक है, as compared to before. So he does this study in the nursery as well, and he also succeeds in the nursery as well because he got the same results in the nursery. So basically, you can say कि reliability factor यहाँ पे आ रहा है. He did the study once, he did the study again in different settings, same results आ रहे हैं. He did this study in a primary school as well, and he got वहाँ पे भी उसको सक्सेस मिल गई. Now he, after doing home, nursery and primary school, he's going to focus on his study about the entire school. And the entire school study is what is the part of your syllabus. So the whole school program के अंदर he's going to do something different. ये एक food dude program introduce करेगा स्कूल के अंदर. ठीक है, you all can relate with this अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर कभी सेफ गार्ड वाले आए होंगे बचपन में, right? So that's what exactly what they were trying to do, but I would say that they failed because Tapered was something different. Schools को ना वो फूड डूड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाएगा. तो वो क्या करता है, स्कूल्स को पूरा फूड डूड्स की जो वीडियोस हैं पूरा स्कूल को दे देता है. सो ही गिव्स द स्कूल 6 videos of food dudes, and her video 6 minutes लंबी होती है. So after giving them the school the videos, he also gives the school फूड ड्यूड थीम रिवॉर्ड्स. वो हो सकता है कि स्टिकर होंगे जिसके ऊपर इनकी शक्लें बनी होंगी कार्टून्स की, या लंच बॉक्सेस हो सकते हैं जिसके ऊपर ये कैरेक्टर्स बने होंगे, कुछ भी ना. सो फूड ड्यूड थीम रिवॉर्ड्स वो भी स्कूल के हवाले कर देता है. ऑल्सो द स्कूल इज ऑल्सो गिवन फेक लेटर्स that are supposedly written by food dude characters. So when the teachers are going to read these letters in front of children, बच्चों को लगेगा कि यार ये characters ने बाकायदा हमें letter लिख के भेजा to encourage us to eat food. So they also give them letters. Uh, Tapper also gives the school some food dude home packs so that the
schools can distribute it to the kids and they get to take it home, ठीक है ना, to eat होगा, ताकि बच्चे जो है फूड डूड वाली चीज को घर लेके चले जाएं. So Tapper also gives the school the manual के लिए गाइडलाइंस होती है कि इनके साथ करना क्या है, क्योंकि स्कूल को बताना होगा कि आपको ये किस तरह लेके चलना है, तो सब मैनुअल के अंदर लिखा होता है. एंड ऑल्सो एजुकेशनल सपोर्ट मटेरियल्स, क्योंकि यू नीड टू रियलाइज कि यार ये स्कूल के अंदर हो रहा है. स्कूल के अंदर एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ टाइम टेबल, किसी टीचर के पास फ्री टाइम नहीं होता. सो व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ फूड ड्यूट प्रोग्राम, मेनी स्कूल्स आर गोना बी रिलक्टेंट कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए. सो व्हाट टेपर डज इज वेरी वेरी स्मार्ट. इसने क्या किया कि एक एजुकेशन सपोर्ट मटेरियल बुकलेट दी थी जहाँ पे टीचर्स को पता चल जाएगा कि अपने सिलेबस के साथ फूड ड्यूट का चीज़ साइमल्टेनियसली किस तरह लेके चलें. So basically, Tapper made everything easy for the school while giving these things to the school. ठीक है. So the idea is what's going to happen कि the teachers at the school are going to conduct the experiment for Tapper, because they have all the material, they have all the guidelines of how to do the experiment. Tapper is going to simply go there and collect the data to find out whether it worked or not. ठीक है. So the क्या कहते हैं, the experiment is going to be conducted into 3 phases, right? The first phase is the intervention phase. Intervention phase lasts for 16 days. So what happens in those 16 days is that the kids are going to on and off watch the videos of food dudes taken out. So after they watch the videos of food dudes, right after the episode ends, the teacher will read letters out to the students, जो fake letters होते हैं, so the kids think कि हमें characters ने letters लिखा है. And उसके बाद क्या होगा, जब वो लंच के अंदर जाएंगे तो बच्चों को ना फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने में रिवॉर्ड मिलेगा. लेकिन अगर बच्चे सिर्फ चखेंगे लेकिन पूरा खाएंगे नहीं तो उनको सिर्फ स्टिकर मिलेगा. चखने के बाद पूरा पूरा खा ले तो स्टिकर भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा. सो दिस इज द इंटरवेंशन फेज, जहाँ पे बच्चों को फुल मजा आ रहा है, ठीक है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है, वीडियो भी चल रहा है, लेटर भी पढ़े जा रहे हैं. So I'm going to show you one example episode of Food Dude के होता किस तरह, so you can kind of understand कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा. Yeah, health promotion. Hi dudes, Rocco here. We've got a really funny adventure for you to watch today. Are you sitting comfortably? The world is in danger. The junk punks, General Junk, Mr. Mina, and Master Disaster threaten to take over our planet by robbing us of our healthy food. But fear not, because here come Charlie, Tom, Raz, and Rocco, making the world a happier and healthier place for you and me. They are the Food Dudes. The time has come for a change of tactics. I, General Junk, will infiltrate what the Earthlings call a supermarket, making sure that what they take home with them is far from healthy and nutritious. Then, when they are feeble, when their precious life force is weak, we will launch our invasion, and they will be powerless to stop us. Excuse me, miss. Could you help me? Dudes, so far we've beaten every attack by the junk punks. But if my calculations are correct, we should expect... As I was saying... The junk punks will change their tactics and attack a different target. The Life Force! Something's wrong! Look, it's General Junk, and he's in the supermarket. You know what this means, dudes? It's time to feed the Force! One by one, the dudes eat the fruit and vegetables that give them their fantastic powers. That's
lifers foods. Eat them up, let's do it, dudes. Eat them up, let's do it, do it. Eat them up, let's do it, dudes. Let's do it, dudes. I'd put that back if I was you. Oh no, not them again. Who did you expect? The Teletubbies? Didn't anyone ever tell you it's not nice to play with your food? Warning! Warning! General junk is loose in the supermarket. But fear not, the food dudes are on the case. Cassie! I'll get you for this! You think you've got the better of me, General Junk? But I'll be back. If I can ever get up from here, that is. Hey guys! La 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 la. Rocco, what are you singing? Well, the can of course. Oh, but I'll be back too, dude. I will be back. Here folks, this is the stuff you really wanted to buy. Thank you so much, food dudes. Goodness knows what General Junk would have done if you hadn't stopped him. Come on, dudes. Let's get back to the dude den before the junk punks strike again. Keep on eating fruit and vegetables and your life force will always be safe. Yeah! Fruit and veg are lifers foods. Eat them up, let's do it, dudes. Fruit and veg are lifers foods. Eat them up, let's do it, dudes. Eat them up, let's do it, do it. Eat them up, let's do it, dudes. Let's do it, dudes. Phew, that was close. But we really canned General Junk in the end. It's great going to shops and supermarkets. They have lots of different kinds of fruit and vegetables for you and your family to buy. Alright, so इस तरह 5 और episodes होते हैं, right? And the kids see, and you know, अब you kind of understand कि किस क्यों काम करेगा, किस तरह काम करेगा, right? So हर episode के बाद बच्चों को letter पढ़ाया जाता है, and when they eat fruits and vegetables, reward देते हैं. So you wanna know कि whether this works or not long term, right? क्योंकि अभी तो काम करेगा intervention phase के अंदर, common sense के बच्चों को reward मिल रहा है, मजा आ रहा है. But you wanna make the kids independent in the end क्योंकि बच्चों के habits जो हैं long lasting हो, rewards के ऊपर dependent now, right? So when the intervention phase ends, एक phase होता है maintenance phase. Maintenance phase के अंदर क्या होता है कि बच्चों को videos दिखाना बंद कर देते हैं, and there are no more letters being read, ठीक है? लेकिन rewards का सीन बंद नहीं करते फौरन से. What they do is reward देते हैं, लेकिन थोड़ा फैला के देते हैं. As in, तुम्हें पहले एक fruit and vegetables खाने पे कुछ reward मिलता था, अब तुम्हें वही reward शायद 5 fruit and vegetables खाने पे मिले, तो थोड़ा space out कर देते हैं. At the end क्या होता है basically, they kind of stop giving the rewards altogether, and you want to see whether the kids start to eat fruit and vegetables even after the rewards are gone. And जिस तरह दूसरे experiments के अंदर हुआ कि the kids do eat fruit and vegetables even after क्या कहते हैं rewards are gone, ठीक है? Behavior sustained का मतलब है behavior is still remaining without foods and rewards, ठीक है ना? So yeah, इसके अंदर भी यही हुआ. So what happened was, not only the kids ate better, but बच्चों की attendance भी ज़्यादा अच्छी हो गई थी स्कूल के अंदर, क्योंकि the kids once they ate healthy वो बीमार कम हो रहे थे, and some kids जिनके अंदर confidence कम था उनकी confidence भी बढ़ गई थी. So yeah, it was successful overall, ठीक है? By the way, the age group for this kids program is 4 to 11 years old, so it may not be applicable to older kids जो cartoons से influence नहीं होते होंगे, but
So in this experiment, right, is the individual situational? Well, it was the situation that changed them क्योंकि the kids की personality के ऊपर फर्क नहीं पड़ा before the food dude situation and after the food dude situation वाली चीज है. So it was situational that changed it. Uh, is this applicable? Yeah, okay, you can now know okay if you introduce these type of programs in the schools is going to be applicable onto schools and safeguard वाले भी यही करते थे but the only difference is safeguard वाले एक ही दिन के लिए करते थे if they did it for a long amount of time शायद क्या पता काम चल जाता. Is this appropriate for schools? Is it practical? Well, for most schools it won't be practical क्योंकि again as I said कि schools को अपना timetable disrupt करना पड़ेगा. Question आया है would Popeye be a positive possible? Yeah, Popeye the sailor eats spinach, right? Spinach खाता है. So I guess that's what they were going for. So that's a good observation. कि Popeye the sailor के अंदर जो spinach खाता है, that gets the kids to eat spinach, right? So Popeye Zabardast is a good example of how you get kids to eat healthy vegetables. Uh, as I said, it won't be appropriate because some schools can ये चल नहीं पाएगा क्योंकि schools are busy and they need to take time out of the busy schedules to make this happen. So many schools would not agree to this. Is this generalizable? Well, it's only generalizable to the school age groups. But मसला ये कि this study was done on UK के बच्चों के ऊपर हमारे पाकिस्तान के बच्चे के ऊपर शायद ये applicable नहीं हुआ क्योंकि लेट्स फेस इट स्कूल हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा ये इस तरीके से प्रोग्राम दिखाओगे तो इट वोंट मेक बी एप्लीकेबल टू देम क्योंकि बच्चे रिलेट नहीं कर पाएंगे सो यू नीड टू नंबर वन चेंज द कैरेक्टर्स चेंज द लैंग्वेज चेंज द थीम ठीक है सो दैट्स व्हाई सेफ गार्ड जैसी चीज यहाँ पे चल जाता है ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं होगी यू नीड टू चेंज इट सो ये कल्चर बायस एक तरीके से उसके अलावा are there another have there been researches that done on being carried out onto schools by someone else and उसके क्या रिजल्ट्स आए सो वॉल्टर की एक रिसर्च है जो उसने बच्चों के ऊपर किया था स्कूल्स के अंदर तो वॉल्टर डिड समथिंग एल्स इससे थोड़ा कुछ अलग किया था सो वॉल्टर ने क्या किया स्कूल के अंदर एक कोर्स इंट्रोड्यूस करा बाकायदा पूरा कोर्स जहाँ पे तुम्हें एग्जाम भी देना पड़ेगा एट द एंड एंड द कोर्स नेम वाज फिजिकल फिटनेस इट वाज एन ऑप्शनल कोर्स जो बच्चों को क्या कहते हैं असाइन किया गया था रैंडमली ठीक है ना कुछ बच्चों को असाइन किया था कुछ बच्चों को असाइन नहीं किया गया था so the kids who did not take the health physical fitness course was the control group and the people who went in the course was the experimental group and you want to find out कि at the end क्या रिजल्ट आता है so वॉल्टर की रिसर्च जो होती है 22 schools के ऊपर carry out होता है yes they're all American schools but 22 schools is a huge deal. So what happened was, overall, the kids who went in the physical fitness course at the end of the 1 year, जब course खत्म हो जाता है, the kids of the physical fitness course had lower cholesterol levels and उनका blood pressure सही हो गया था. And the kids who are in the control condition, their cholesterol levels were relatively higher. So the fitness course did improve the health of the kids. लेकिन इसमें भी मसला होता है क्योंकि यू नो व्हाट टू टीच दिस कोर्स फिजिकल फिटनेस का जो कोर्स पढ़ाने के लिए तुम्हें एक बकायदा टीचर हायर करना पड़ेगा स्कूल को एंड स्कूल्स के अंदर वैसे ही टीचर को तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं मिलती तो कुछ स्कूल्स are gonna refuse hiring another teacher so it again may not be applicable to school because it's gonna be expensive but talking about Tapper's experiment validity के बारे में हम क्या कहेंगे well this is a very externally valid study also इसके अंदर you can see that this is a longitudinal study क्योंकि it went about for a long amount of time and also Tapper ने pilot studies की छोटे मोटे studies पहले की थी उसने to make sure that the study is valid so it's not only valid but it's also reliable as well क्योंकि Tapper के results बार बार same आ रहे थे जब भी वो करता है study so it has both validity and reliability at the end deterministic और free will के हवाले से I'm gonna say free will क्योंकि even the rewards were stopped रिवॉर्ड्स खत्म होने के बाद भी बच्चे जो थे अपनी मर्जी से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खा रहे थे दैट्स व्हाई इट्स गोना बी कंसीडर्ड फ्री विल नॉट डिटरमिनिस्टिक नेचर नर्चर में से आई गेस नर्चर होगा क्योंकि you're teaching kids to eat fruit and vegetables रिडक्शनिस्ट वगैरह आई विल फील कि एप्लीकेबल नहीं होगा सो दैट इज द फूड डूड प्रोग्राम ठीक है ना फूड डूड प्रोग्राम के अंदर ये उसकी समरी होगी दैट्स ओनली गोना टॉक अबाउट द होल स्कूल प्रोग्राम ठीक है तुम्हें पायलट स्टडीज के बारे में बात नहीं करना पड़ेगा ठीक है uh yeah question it won't be cost effective well in the end it will be not cost effective अगर
स्कूल्स को ये मटेरियल्स खरीदने पड़ रहे हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा. इट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव अगर स्कूल को किसी और टीचर को हायर करना पड़ रहा है कोई अलग कोर्स पढ़ाने के लिए नहीं होगा. अगर स्कूल को अपने टाइम टेबल के अलावा किसी और दिन के अंदर ही कैरी आउट करना पड़ेगा मतलब उनको एक्स्ट्रा डे शेड्यूल करने पड़ेंगे तो नहीं होगा. लेकिन अगर स्कूल अपने शेड्यूल के अंदर कर पाता है विदाउट हायरिंग एनीबॉडी एंड द मटेरियल्स आर गिवन टू द स्कूल फॉर फ्री so it will be cost effective. So it depends on क्या क्या circumstances होते हैं. सो जितना मुझे पता कि ये तो स्कूल को मटेरियल दिया गया था सो आई गेस कि इस कंडीशन के अंदर स्कूल के लिए फायदेमंद था. बट क्या पता दूसरे रिसर्च जो हो रहे होंगे उसके अंदर क्या पता स्कूल को ये चीजें खरीदनी पड़े. But type research itself is cost effective. For office places, right? You have so this is a second research in this section. जहाँ पे तुम office places के बारे में बात करोगे to how to increase healthy behavior in offices. ये बच्चे स्टडी ऑर्गेनाइजेशन वाले पढ़ चुके हैं एबनॉर्मल वाला नहीं पढ़े. सो इसके अंदर एक टेक्निक इस्तेमाल करोगे दैट इज टोकन इकोनॉमी. टोकन इकोनॉमी हर किसी के साथ हो चुका है ठीक है ना. यू डोंट इवन रियलाइज इट जब तुम सिंदबाद के अंदर या झूलों के अंदर जाते हो एंड यू प्ले अ गेम जहाँ पे टिकट्स मिलते हैं गेम खेलने के ऊपर एंड व्हेन यू एक्सचेंज दीज टिकट्स फॉर रिवॉर्ड एट द काउंटर दैट्स टोकन इकोनॉमी. तो टोकन इकोनॉमी के अंदर बेसिकली यू नीड टू नो कि एक बीच में सेकेंडरी रीइंफोर्स आता है तो फौरन से वो रिवॉर्ड नहीं मिलता बीच में दूसरा रिवॉर्ड आता है जिसके बदले आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा टू गेट द ओरिजिनल रियल रिवॉर्ड. ठीक है. So you want to find out whether token economy works or not in a professional setting. So professional setting is the mind जो बकायदा गारों के अंदर लोग काम करते हैं इज डन बाय फॉक्स. फॉक्स टू वांट्स टू सी कि यार टोकन इकोनॉमी जो है माइनर्स की सेफ्टी इंप्रूव करेगी कि नहीं करेगी. सो ही कंडक्ट्स दिस एक्सपेरिमेंट टू माइंड्स माइन ए माइंड बी एंड दोनों माइंड के अंदर सेम चीज निकाली जा रही है. सो दे यूज द सेम मशीनरी. सो दोनों माइंड के अंदर जो डेंजर लेवल है वो इक्वल है. सो दैट्स व्हाई दोनों माइंड के अंदर कोई फर्क नहीं है. सो दैट्स व्हाई ही इज डूइंग द स्टडी ऑन दोस टू माइंड्स. यू कैन से कि बंदा शायद रिलायबिलिटी चेक कर रहा होगा क्योंकि अगर उसका रिजल्ट वहां पे भी आया तो उसका रिजल्ट वहां पे भी आना चाहिए क्योंकि दोनों माइंड के अंदर कोई फर्क नहीं है. So you can see that this study goes on for a long amount of time. So this is a number of people who were in the mines at different years. So as you can see, yes, number of people increase and decrease, but every time you took the क्या कहते हैं look at the workers in the mine, 100 से कम ज़्यादा हैं हर दफा. So it is a very generalized study in regards to number of people. बहरहाल माइन ए एंड माइन बी के अंदर सेम टाइप ऑफ पीपल वर्क. माइन ए के अंदर ऑफिस वर्कर्स इंजीनियर्स मैनेजर्स वर्कर्स एंड सेम पीपल वर्क इन द माइन बी. ठीक है मतलब सेम कैटेगरी के पीपल नॉट द सेम पीपल इटसेल्फ. सो व्हाट यू डू इज नंबर वन माइन ए एंड माइन बी के जो लोग हैं उनको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. These categories are based upon सबसे खतरनाक काम किसका है फिर से कम खतरनाक काम किसका है फिर से कम खतरनाक काम किसका है फिर सबसे सेफ काम किसका है. So the office workers are सबसे least खतरनाक काम करने वाले लोग. सबसे most खतरनाक काम करने वाले लोग are the people who work with electric या आग लगने वाले materials such as oil या fuel. So क्योंकि इनका रिस्क सबसे ज्यादा होता है so इनको रिवॉर्ड जो दिया जाएगा to do their work safely is greater than all the other groups. So yeah, makes sense. More risk, more reward. But there are certain conditions that each group has to follow to get the reward. ठीक है ना? These conditions are that whatever group you are in, you need to fulfill these conditions. So if you work without getting injured, right? So you will get the tickets, your tokens, जो भी होता है. If you and your group member also work successfully, a group member को भी चोट नहीं लगती काम करते हुए, so तुम्हें भी रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हारे ग्रुप मेंबर को रिवॉर्ड मिलेगा. So basically तुम्हें रिवॉर्ड दो तरीके से मिल सकते हैं. तुम्हें चोट ना लगे और तुम्हारे ग्रुप मेंबर को भी चोट ना लगे. If you make safety suggestions and वो अच्छे suggestions है तो तुम्हें फिर भी टोकन मिलेगा. And if you witness an accident happening and you stop that accident from happening, or you take any measures to make the environment safe so that accidents don't happen. For example, होता है ना कि तार बीच में अटका हुआ है लोग फिसल सकते हैं तार से तो तुम तार को निकाल देते हो. That's also counts under preventing accidents. So whatever you do to stop accidents from happening, you will get tokens. लेकिन कुछ conditions ऐसे हैं जिसके बेस पे आपके टोकन आपसे लिए जा सकते हैं. अगर आप
या आपका ग्रुप मेंबर इंजर होता है तो आपसे टोकन लिया जाएगा. If you damage something, आपसे टोकन लिया जाएगा. If if you see someone getting injured, but you don't tell it to the management, and they found out, so आपसे टोकन लिया जाएगा. So you need to report accidents and injuries as well. So upon these conditions, upon this token economy का पूरा scene, does the people's behavior increase so that they work safely? Well, at the end, yes. You find out कि पहले टोकन इकोनॉमी से पहले माइन ए के अंदर इतना नुकसान होता था हर साल, एंड माइन बी के अंदर इतना नुकसान होता था हर साल. टोकन इकोनॉमी के बाद माइन ए के अंदर नुकसान इतना आ गया एंड उसका नुकसान इतना आ गया. सो यू कैन ऑलमोस्ट सी के 90% डिक्रीज हो गया. Some would argue that token economy itself is expensive क्योंकि at the end people are gonna get rewards when they exchange tokens. So क्या reward देते वक्त खर्चा बढ़ेगा नहीं? हाँ आता है, खर्चा आता है, लेकिन if you combine the खर्चा and the losses suffered after token economy is nowhere near what it was before token economy. So it is cost effective in that regard. The people are जो tokens होते हैं ना, people go to the shop near the town, and when they go to the town, they show the tokens to the town का जो storekeeper है उससे चीजें exchange करते हैं. तो फॉक्स ने टाउन का जो स्टोर कीपर होता है उससे पहले से बात की हुई है कि यार टोकन जो देगा ना उसको दे देना. So सेटिंग हो चुकी होती है. So that's how people exchange tokens for things. ठीक है. So at the end the accidents के नंबर कम हो गए थे and जो माइंड को नुकसान था वो भी कम हो गया था, and it shows that token economy does work. It may not be applicable on other occupations. सिर्फ miners के ऊपर था, क्या पता दूसरे occupations के ऊपर applicable नहीं होगा. But it was generalizable क्योंकि number of people, but now may not be generalizable upon it depending upon the occupation of the people. Uh, is applicable at least individual situational. Well, I would say it is in situational क्योंकि token economy एक situation थी which was the variable, बाकी सब चीजें personality वगैरह same थी. So it was a situation that changed the accidents for the people. Determinism वाला concept यहाँ पे apply नहीं होगा. Is it cost effective? It is cost effective. Is it nature nurtures nurture because you're teaching people to be safe by introducing a new concept to it, nurture होगा. ठीक है. So yeah, that's the entire experiment, right? Replicable था क्योंकि इसने mine A and mine B के अंदर same results आए. It was valid क्योंकि ecologically एक valid होगा क्योंकि it's a field experiment, ठीक है ना. And it's for longitudinal as well. Ethics का मतलब ये हो सकता है कि you may cause additional stress to people जिनके आप tokens ले रहे हो, so that could be coming under psychological harm. Uh, there was another study. It is a side study. You can quote it, you cannot quote it, मर्जी है. So Johnson शैम्पू वाले कंपनी के अंदर एक प्रोग्राम चला था जहाँ पे लोगों को ऑप्शन दिया गया था टू वॉलंटियर फॉर अ प्रोग्राम. उस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एम्प्लॉयज की फिजिकल एग्जामिनेशन होती है एंड फिर उनको लाइफस्टाइल सेमिनार के अंदर बिठाया जाता है जहाँ पे उनको मोटिवेट करते हैं. सो वट एवर द हेल्थ प्रॉब्लम पीपल हैव उसके हिसाब से उनको एक फिटनेस कोच असाइन कर देते हैं. किसी को स्मोकिंग स्टॉप करें तो स्मोकिंग का एक्सपर्ट डाल देते हैं. किसी को वेट लॉस करें तो वेट लॉस के प्रोफेशनल दिला देते हैं. So at the end, what happened that people who went under this program, they started to increase their physical activity and they started to quit smoking as compared to people who did not undergo this program. So it does show कि companies के अंदर programs launch करना भी effective है. किसी किसी से ऐड करें token economy effective है. So Bharat, that's it. Uh, meeting end over here, so I'm gonna restart it again.